सर्भिसमा जोइन गरेँ 96 में हाम्रो साथी पेमा मैले फर्स्ट टाइम मालदामा आई थिंक मालदामा होला सर्किट हाउसमा हाम्रो आइजी सर हुनुहुन्थ्यो के मुखमा गरेर सोफा आयो हाम्रो एउटा मिटिङ भएको थियो आइजी सरले तिनवटा डिस्ट्रिक्टमा मिटिङ गरेको थियो उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर र मालदा त्यतिबेला फर्स्ट टाइम आएर थियो त्यहाँदेखि नै हाम्रो सर्भिस लाइन स्टार्ट भन्नको लागि त थुप्रै कुरा छ पछि भन्छु र उहाँको he is not like his colleague भन्दिनँ म he is more than friend to me not only friendly friend उहाँसँग मेरो परिवार भाउजूसँग नानीसँग मेरो परिवारसँग उहाँको अति नै अटुट एउटा सम्बन्ध छ रहन्छ र प्रोग्राम सबैहरूले हेर्नुभयो तपस प्रोग्राम त देख्छौँ आजको प्रोग्राम त इट्स नट लाइक फेयरवेल बोल्नु होइन दिस इज नट फेयरवेल बोल्नु না এটা ফেয়ারওয়েল বলাও যায় না আমাদের প্রোগ্রামটা মানে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে ইটস লাইক চেঞ্জিং মানে ফেয়ারওয়েল না হয়ে গেট টুগেদার মতো হয়ে যাচ্ছে গান হচ্ছে বাজনা হচ্ছে গান করছে সবাই আনন্দ করছে সো আমাদের প্রোগ্রামের যেটা মোটোটা ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট উই ক্যানট সে দিস ইজ ফেয়ারওয়েল না ইটস আ গেট টুগেদার উই আর সেলিব্রেটিং মানে আজকে একজন লোক তার সার্ভিস পিরিয়ড কমপ্লিট করে সাকসেসফুলি কমপ্লিট করে রিটায়ার হয়ে নতুন জীবনে এসে অলরেডি প্রবেশ করেছে তাকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান তার সঙ্গে আমরা একটু আনন্দ ফুর্তি করছি সো এটাই বলবো আমরা আজকে গেট টুগেদার এটা ওনার জীবনের কিছু केही अतीतको झलक तिम्रो लामाहट्टा एउटा सानो ठाउँ एउटा प्यारो हरियालीले भरेको चारैपट्टि हरियो रुखपात चियापत्ती बाजा हाम्रो साथी जन्मेको र भाउजू पनि त्यही गाउँकै हो भाउजू बिहा पनि निकै भन्ने छ भन्छु पछि अहिले भन्दिनँ अहिले जस्ट आई विल ट्राई टु सानो अलिकति बनाएको यो ভিডিওটিকে দেখাতে চাচ্ছি তাতে যদি কিছু ত্রুটি হয় আগে থেকেই ক্ষমা চাচ্ছি সো म दीपक कुमार राई हेडमास्टर लामाहट्टा हायर सेकेन्डरी स्कुल र विशेष आज यहाँनिर मसँग हाम्रो एकदमै गाउँमा पहिला सानैदेखि हामी साथी पेमा डुक्पा भन्छौँ हामी है र उहाँ हामीसँगै यसै ठाउँमा जन्मी हुर्की खेली बढी र यसै स्कुलको भन्दा उहाँ अब हालैमा आफ्नो सर्भिसबाट अवकाश प्राप्त गर्नुहुँदैछ उहाँले रिटायर हुनुहुँदैछ र म मेरो साथीलाई साथीको हैसियतमा र गाउँलेको हैसियतमा मेरो यो गाउँको सबै छिमेकीहरूको हैसियतमा चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ यो रिटायर्ड लाइफ हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै सुस्वास्थ्य राम्रोसँग